Hello friends, the topic which we will discuss today is HTML. HTML means Hypertext Markup Language. Basically, hypertext is a text that contains link to other text or a web page. And markup language means it is not a programming language but a language which deals with more or less with layout of web page. हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट है, आप कह सकते हो वो क्लिकेबल टेक्स्ट है जिसको अगर हम क्लिक करते हैं तो कोई नया पेज या किसी और लिंक पे हम पहुंचते हैं। एचटीएमएल में जो सबसे पहली चीज हम लोगों को पढ़नी है वो है, एक टर्म आता है टैग। टैग इज अ सिंबल। आप कहते हो टैगिंग, टैगिंग आप समझते हो ना, किसी चीज को टैग करना। टैग इज अ सिंबल इन एचटीएमएल विद ए स्पेशल मीनिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। First tag is called container tag and second tag is empty tag. The difference between both tags will be clear to you after coding. A container tag is a tag which contains both opening and closing tag. Empty tag is a tag which don't require closing nor opening tag both. It contains only opening tag actually. So I will demonstrate with an example, and first of all I want to show structure of HTML, basic structure of HTML which is required in more or less in each and every coding. First of all, you are supposed to write HTML. It is not case sensitive at all. First of all, you have to write like this, HTML. First tag is HTML. If you will start with this tag, you have to end with like /HTML. This is opening tag and this is closing tag. That means HTML is also a form of container tag. After HTML, you have to write one more tag, that is head tag. Head tag is also a type of container tag. In between head tag, we used to write a tag which is called title tag. I can write it like this, title. You can write any title of your page like my first HTML, my first HTML demo आप लिख सकते हो, डेमो। इसके बाद अब इस टैग को आप क्या करोगे, आप इसको क्लोज कर दोगे, टाइटल। आफ्टर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग, आप एक ऐसा टैग है जिससे आपकी पूरी प्रोग्रामिंग की कोडिंग इसी में होती है। दैट टैग इज कॉल्ड बॉडी टैग। सो वी राइट आवर ऑल कोड हियर इन बिटवीन बॉडी, ओपनिंग बॉडी एंड क्लोजिंग बॉडी। ये एक ऐसा आप कह सकते हैं ये स्पेस है जहां पे हमको कोडिंग लिखनी है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, HTML का, जिसे हमें हर प्रोग्राम में इतना तो लिखना ही है। अब जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि यू कैन कंसीडर इट एज अ बॉडी ऑफ सम पर्सन। आप कैसे कह सकते हो, अगर ये HTML किसी आदमी का नाम, हम कहते हैं कि HTML एक कोई आदमी है, तो आप कह सकते हो वो यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड यहाँ पे होता है। उसकी बॉडी स्टार्ट होती है यहां से, एंड यहाँ पे होती है। आप कह सकते हो हेड स्टार्ट यहाँ होता है, हेड यहाँ, एंड यहाँ होता है। टाइटल यू कैन ट्रीट एज आइज। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप एटलीस्ट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। बॉडी के बीच में क्या लिखना है, दैट वी विल लर्न वन बाय वन। देयर आर सम मोर टैग्स आप कह सकते हो इन बिटवीन बॉडी टैग वी यूज। वो टैग हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहले एक टैग हम लोग पढ़ते हैं वो है, आप कह सकते हो हेडिंग टैग। हेडिंग टैग ये आप कहते हो, अगर पहली हेडिंग आप डालते हो तो आप ये सब चीजें जितने टैग्स आपको यूज करने हैं बॉडी टैग के अंदर यूज करने हैं। हेडिंग टैग अगर आप पहली हेडिंग लिख रहे हैं तो H1,
से स्टार्ट करो, यू विल एंड इट विथ /s स्टूडेंट। अब बीच में अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया CHS, आपने यहाँ पे लिख दिया, तो CHS will come as a heading. In a single page you can write at most 6 headings. अगर आप कह सकते हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो जाएंगी। अगर H1 ये आपका CHS आप लिखते हैं, इसके बाद आपने टैग में H2 CHS लिख दिया, तो ये इसकी सब हेडिंग होगी। इसके बीच आप पूरे टेक्स्ट और आप पूरा अपना डेटा लिख सकते हो। H1 टू अप टू S6 आप लिख सकते हो हेडिंग। हेडिंग टैग के बाद आप एक टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो लाइन चेंज और लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग आप लिखते हो BR टैग, ठीक है। अब देखिए BR टैग में आपको ओपनिंग टैग ही लिखने की आवश्यकता है, क्लोजिंग टैग यू डोंट नीड टू राइट क्लोजिंग टैग। सो लाइन ब्रेक टैग इज अ टाइप ऑफ एम्प्टी टैग, ठीक है। फॉर पैराग्राफ we can use a tag like P/P. For movement of text, अगर आप चाहते हो टेक्स्ट मूव करे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम अप टू डाउन, आप उसके लिए जो टैग यूज करते हैं वो मार्क टैग है। आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट, आप कह सकते हो। इवन इमेज भी आप मूव करा सकते हो, उसके लिए जो टैग यूज होता है वो हो गया आपका MARQUE, mark tag. Some people call it marque. आप ब्लैक बुक हम पढ़ते हैं तो उसमें एक टैग और है, उसमें ब्लिंक टैग है और ब्लिंकिंग टेक्स्ट। आप कह सकते हो ब्लिंक से आप इसको स्टार्ट करो, यू कैन एंड इट विथ /blink। आप फॉन्ट में कोई चेंज आप कर लाना चाहते हो, फॉर चेंजिंग योर फॉन्ट, फॉर चेंजिंग कलर ऑफ फॉन्ट और फॉर चेंजिंग स्टाइल ऑफ फॉन्ट, यू कैन यूज अ टैग फॉर फॉन्ट। यू कैन यूज अ टैग लाइक F20 font. You will end up with writing like /font. Okay. So font tag you can write like this. After font tag, it's better to introduce one of the most important tag, which is very lucrative for you people. That is image tag. Image tag, you can write it like IMG image SRC. SRC means source. Image SRC is equal to, and we will write source here in double quote. So SRC means source. One more thing, this is also a type of empty tag. In some books, opening and closing image tag is there. People used to write like this, image SRC is equal to, in between quotes they will write image, and after some people write /img, but this /img, that means this closing tag is not required in image. It is also a type of empty tag. After empty tag, we can also move to one more tag, one of the most important tag, that is called anchor tag. Anchor tag is a type of tag for page linking, which we use for page linking. We can link a page on our own page, or we can link some document also. This tag we used to like this, href. This is hyperlink reference. In between double quote, you write, either you can write a URL here, you can write URL of Google, and after this you can write any text like click here to go to page 2. Okay. After this we can write like /a. So a text like click here to go to page 2 in blue will appear on our web page, and if you will click this link, this clickable text, then you can go through directly to this link, hyperlink.
Here you can write like www.google.co.in, which HTTP, and also you can write another HTML page like b.html. If you will save a page like a.html, here you can write like b.html. You can move from a.html to b.html. So these are the main tags basically: heading tag, line tag, paragraph, movement tag, blink tag, font tag, image tag, and anchor tag. There are some more tags which we'll learn one by one, and in short we have to wrap up these things in brief. So first of all, I will give you a demo of a simple program. You can pause this video and note down these tags. First of all, we can write it's better to write a HTML page with a heading like CHS. Okay. After this, if you want an image of CHS with some text, after this we want a link here. We can write here like BHU, a link. There must be a link here. By clicking to this BHU text, we will go to website of BHU. Okay. So first of all, we have to write like this: HTML. Okay. After this, you can write head. After this, you can write like this title. You can write like this CHS web page. Okay. After this, you can write like this slash title and slash head. जब भी हम लोग बॉडी टैग लिखते हैं, यू कैन वेरी इजिली चेंज कलर ऑफ अ बैकग्राउंड. आप यहाँ पे बॉडी टैग के बाद आप लिख सकते हो बॉडी, BGCOLOR. One thing which you should note down, spelling of color is COLOR. It is actually HTML is developed basically in USA. So color spelling of color in American English is COLOR. They used to skip U. So body BG color is equal to, you can write name of color or ASCII code of that color. Better to write like this, red. Okay. Body BG color is equal to red. Even you can write body background is equal to name of image which is available in your computer. So also you can change background of your HTML page. After this, we are supposed to write this CHS. So H1 means CHS slash H1. This CHS will come as a heading. After this, we want some text, that is history of CHS or name of school and all those things. You can write some text like establishment of CHS and all those things. Here, if you want to change lines, you have to write like this: BR. BR tag is required for changing line. After this, you want some image to appear. Then you can write like IMG SRC is equal to. You have to write location of image. You can also put image on your desktop, and then only you have to write this image name. Suppose you have image name chs.jpg. We can have different type of image like JPG, PNG or TIF image. So you are supposed to write image name with name of extension. Either you can write JPG for JPG image, for TIF, for PNG image. For different type of image, you can write extension. Image SRC is equal to chs.jpg. After this, you are supposed to write height is equal to, in pixel, you can write 500. Width is equal to 500. So your image with image will come here with 500 by 500 pixel length.
After this, you are supposed to write some more content. Suppose you want some content to appear which will move like this. So you can use a tag named mark. People call it marquee. So you can write here CHS is Mother Institution of BHU. Institution of BHU. After this mark, you are supposed to write ending tag, closing tag of mark. Okay. After this, you want a text BHU to appear. After clicking to this tag, you want to move to a website of BHU. For that, you are supposed to write this like a href is equal to, in between quote you are supposed to write website name. You are supposed to write URL. After this, you have to write BHU, and you have to end this tag like /a. Okay. After this, you will end with /body and /HTML. So text BHU will appear here. Okay. After clicking to this text, you will move from this page to website of BHU. Okay. So this is a simple code which you can easily learn. Better to do hands-on. So it's better to rub it here. So instead of writing whole code, we will write only tags between body tag. Okay. So suppose you want to write like BHU. After this BHU, you want a smaller BHU. After this, you want one more smaller BHU. After this, you want BHU. In descending order, you want BHU to come. And one more thing, you want this to come in red, this BHU to come in orange, this to come in blue, this to come in green. Okay. And you can write it violet or something like this. So here you have to write everything. You will write as same, but we are supposed to write only body tag. So body we can write like body. For first BHU to come in red, we want tag named. First of all, we will write H1 as a heading. In between H1, we are supposed to write font. Color is equal to what? Red. You can write in a straight line or you can write in next line. Font color is equal to red. Now you are supposed, even you can choose a style. Either you can write in different formats. Font color is equal to red. You are supposed to write BHU here. After this BHU, you are supposed to close this tag by writing /H1. So first BHU as a heading with the biggest heading will come and its color will be red. After this, if you want, okay, one more thing, you have to close this font tag. It's better to write like this. I will skip one thing, /font, and after this /H1. Okay. After this, if you want to want BHU to come in orange or some other color, you are supposed to write S2, then font color is equal to orange. After this, you are supposed to write BHU here, and you are closing this font tag, and after you are closing this S2 tag. So one by one you can write H1, S2, S3 up to how many heading tags are required? 5 tags are required up to from H1 to H5.
After adding this, you are supposed to close with body tag. Okay. So this code you will use for 5 types of heading of BHU in decreasing order. Suppose you want 2 pages of different colors and you want to move from one page to another page by anchor tag. So code which you will write will be like this. First will be body, its color, suppose its color is red, BG color is equal to red. After this, suppose this page is description of CHS, you can write like this, H1 heading CHS / H1. You can write detail about CHS and everything. After this, you are supposed to use an anchor tag A, href is equal to b.html, and here you can use a text like next /a, okay, /body. First page, first code you will use and you will save it as capital A dot HTML. I haven't write whole code, but code between body tag. आप इस कोड को a.html से सेव करेंगे. ये कोड आप HTML आप नोटपैड में लिखते हैं या वर्ड पैड में लिख सकते हैं, उसको आप सेव करेंगे a.html से. और दूसरा अगर आप पेज आप बनाते हैं, वो आप मान लीजिए एक और हम पेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसके नीचे मैं लिख देता हूँ. ये पहला पेज हो गया. दूसरा पेज अगर आप बनाते हैं आप बॉडी, इसमें आप कलर बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं, बीजी कलर इज इक्वल टू येलो. ये पेज डिटेल कंसिस्ट करता है आप इसका BHU का, आप यहाँ लिख सकते हो BHU या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी /H1, इसके बारे में आप लिख सकते हो. और एक टेक्स्ट आपको लिखना है ahref इज इक्वल टू, ये आपका पेज क्या था, a.html था. ये पेज हम बना रहे हैं, उसको सेव करेंगे b.html से. इसको हम सेव करेंगे b.html से. ठीक है. अब ahref इज इक्वल टू, यहां पे आप लिख दिए डबल कोट पे a.html और यहां पे लिख दिया प्रीवियस पेज, और इसको आपने बंद कर दिया एंकर टैग को. उसके बाद आपने बंद कर दिया बॉडी. ठीक है. पूरा कोड आपने 2 पेज पे आपने लिख लिया. इसको सेव किया a.html से, इसको सेव किया b.html से. सो यू विल गेट 2 पेजेस, 2 different pages. First page will be red in color, second page will be yellow in color. Here CHS will be written, here BHU will be written. Here there will be a text called next. Here there will be text where it is written previous page is written. So if you will click this clickable text, you will move to this page. If you will click previous link, you will move towards this page. So you can move from to and fro from page A to page B or from page B to page A. So we will write some more codes about HTML and we will discuss one by one. Better to end this video. In next video, I will come with some sort of forms, some sort of forms which you used to fill in school, and some tables. We will learn how to create tables, how to create forms and different things. We can't demonstrate here because we need a PC, and for PC I will share snapshots of PC codes also. So study hard and stay well and stay safe in your house.